Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with a derivative and technical update. On technical front, Friday Nifty opened on a positive note, and after that made a high of 17,838 levels and closed with a gain of 0.28%. On the weekly chart, if we see Nifty form a doji candlestick pattern, which indicates a breather after the recent up move in the Nifty. Now, 18th October gap level, which is around 17,400, will act as a support levels. And on the higher side, if Nifty crosses 17,950 levels with the volume breakout, then fresh buys will trigger. On the sectorial front, Friday auto and oil and gas were a top gainers, while pharma and metal were a top losers. On Bank Nifty front, Friday Bank Nifty witnesses selling pressure and closed with the loss of minus 0.75%. Technically, on the daily chart, if you see Bank Nifty traded above the trend line breakout levels, which is still positive. Ahead of RBI monetary policy, index may find a support levels near 14,000. And if we see last couple of weeks, Bank Nifty was a continue outperform. So current week profit booking can be viewed, and one can follow buy on decline strategy on the Bank Nifty front. Bank Nifty support at 14,000 levels and resistance at 41,840 levels. On the derivative front, Nifty future witnesses short covering of around minus 20.62%, with the decline of 3.2 million shares. Major addition happened in the call option front at 18,000 strike, with the total 49.77 million shares. And put option front major addition were seen at 17,700 strike with the 45.14 million shares. Bank Nifty witnessed a long unwinding around of minus 17.18, reduction of 4.3 lakh shares. Bank Nifty front major addition in the call option seen at 41,500 call for 26.67 million shares and 41,300 call 13.21 million shares. While on the put option front, major addition was seen at 41,000 levels, 15.64 million shares. Long buildup was seen at Bosch, Cummins India, and short buildup were seen at Balrampur Chini and Crompton. On the FII data front, FII went to short by minus 5,891 contracts. So overall net long by plus 17,394. And net long short ratio is a 57%. So that's it from my end. Now I will hand over to Vishal sir for further updates. Yeah, good morning, sir, and good morning, team. And first, starting on the results which came on weekend and then Friday. First is Maruti. So Maruti has reported numbers which were in line with what we are estimating at the revenue and EBITDA, but profit were sharply higher by around 10 odd percentage point, and the same was getting reflected even in the stock price. Now, company total sales grew by around 46% on Y&Y basis, and EBITDA margin has also expanded by 500 basis point on a strong volume growth and improvement in net realization. Going forward, the robust pending order book, and then there is a easing of semiconductor supply and new launches which the company is launching in the market. This is expected to drive a double-digit volume growth over the next 2 odd years, and company will report strong numbers. However, given a sharp uptick in the stock price, we have unchanged our price target, and due to this, our rating is revised to hold now. Overall, good set of results from Maruti. Second is on Sona. Sona reported better than our estimate numbers, and sales has actually grown on a quarter-on-quarter basis. We believe Sona is likely to be fastest growing Indian-based auto ancillary company with the pretty strong sort of 34% PAT CAGR over the next 2 odd years, having a significant exposure in EV. So we maintain our buy rating on the stock with a target price of 685. Next we have published a note on IT sector where we have highlighted
And most of the companies, in terms of their price to earning valuation multiple, they are approaching their 5-year average. But after this Q2 numbers, many of the companies, they have highlighted concerns on the lower discretionary spend, weakness in the retail and mortgage and high tech and communication, primarily in US and Europe. And we understand, like, this will keep probably, like, the stock performance in check, because like EPS correction is yet to take place, because that has not yet happened even in this quarterly result season that we have seen. So I mean, like, we remain selective in our buy recommendation, where we find still there is a value that is there. In terms of our positive view remains on HCL Tech in large cap and TechM and Scient in mid and small. Next is on Inox Leisure. So they have announced the commencement of commercial operation of multiplexes in Visakhapatnam, and the company has overall, it has set a target of adding 77 odd screen in FY23 and has already added 23 till date. If we this fiscal, excluding the acquisition of 11 screen, which is during the gone by quarter, we believe the, like, screen addition targets of Inox and PVR. Inox has achieved 43% of its target, and PVR has achieved 30% of its target. Overall, it's a positive development for Inox. We currently have a buy rating on the stock with a target price of 630. Next is on Lemon Tree. So company has announced the signing of hotel in Haridwar, which is expected to be operational by the end of CY24. This will be managed by Carnation Hotel Private Limited. I mean, it's a 50 room hotel, and plus it has a restaurant, gym, and other facilities. This is the fourth upcoming property in the state, and in terms of our stock recommendation, we have a hold rating with the target price of 78. Next is on CCL. So CCL numbers on a profitability level, it was lower than what we were expected, and the revenue was better than what we were estimating. Overall, I think if you look at from a valuation point, still there is a comfort in the business which CCL is operating, and we have a buy rating on the stock with a target price of 541, and we'll update more post con call, which is scheduled today. Next is on Hero. So the company has announced, like, they registered a pretty strong set of volume growth in this festive period, and they have reported, like, retail sales growth has been around 20% on Y&Y basis on Hero. Overall, it's a positive. Next, a couple of other results, not yet results, which include Vedanta. So Vedanta has reported numbers. The number were weaker than what the street was expecting. They were reported the revenue actually fell by 5% on Y&Y basis, and their EBITDA has actually fallen with the weakness in the margin. EBITDA margin was around 21% vis-a-vis 26% on Y&Y, and this has led to a weak set of profit also. Overall, weak set of results from Vedanta. Next is on Tata Power. So Tata Power has reported a mixed set of results. In terms of the revenue were better than what street was expecting. However, like, the EBITDA fell by around 5% on Y&Y basis. That was lower than what the street estimates are. If you look at on profitability front, profit has actually, they were up, led by, like, primarily led by the non-core expenses which are there below the EBITDA. So that has led to increase in the profit estimates for Tata Power. And last thing from my side is on JSW Energy. So JSW Energy has reported number which was better than what the street was estimating. And if you look at company at a revenue at actually, though the revenue has declined, but it was largely expected. And in terms of vis-a-vis the consensus estimate, the number is 10% higher than what the street was expecting. EBITDA has actually fallen by around 13%, and which was largely in line with what was street was expecting. And net profit has actually, due to the lower EBITDA, it has actually fallen. Overall, I mean, if you look at JSW numbers on the revenue front, they were better than what the street was expecting. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand it over now. Back to the team. Good morning, team. A few more news updates from my end. Today, with the global market, we are expecting the NIFTY to open a little bit on the higher side. So 18,000 is what the expected high in the NIFTY. So the few results which are expected today are the Bharti Airtel, Castrol, Tata Steel, and Data Pattern. This will be the coming up with the quarterly earnings. The first news update is on Reliance. The Reliance Strategic Business Venture, which is the only subsidiary of the RAI, has acquired additional stake in Skytrans for rupees 123 crores. With this, the total stake comes at 62.83%. Next is on IOC.
So IOC on Saturday has reported their numbers. So it's a net loss of 272 crores from July to September. This is the second straight quarter of loss because selling of the petrol and diesel plus the cooking gas LPG at the rates below their cost. So this is the reason why it's reported a loss. Next is on JSW Energy. On Friday, the company posted 37% rise in net profit, that which is at 466 crore in the September quarter. This is basically on the back of higher revenues. So that's positive for the JSW Energy. Even the Tata Power has posted the numbers. So the firm posted by 94.3%, which is a rise in September quarter, with energy consumptions remaining robust as economic activity gears up. One more update on Dr. Reddy. The consolidated net profit after PAT for the quarter ended September 30 was up by 12%, which is around 1,112 crores against 990 crores in the same quarter. So that's a little bit positive for the Dr. Reddy. Sugar stocks, the government extended the restrictions for sugar exports by 1 year by till October 23. So sugar stocks will be on a watch. Maruti has announced to recall its 9,925 units of Wagoner, Celerio, and Ignis, which has been manufactured during August 3 to September 1. So that will be on a watch list. In case one more update on Nykaa, the company has revised the record date of its 5:1 bonus issue to November 11 from November 3 previously. Himadri Chemical, the company has reported a 7% sequential decline in consumption profit of rupees 35 crores for the quarter ended September FY23. Revenue has grew by 1.2% sequentially to rupees 1,059 crores for the quarter. Cydus Lab, the company has received approval from the United States of Food and Drug Administration to market acetaminophen injection in the US. This injection is indicated to relieve mild to moderate pain and to reduce the fever. So that will be something to watch. Sail India, the company has signed an agreement with the Airport Authority of India to facilitate commercial operations at Rourkela Airport under RSN Udan scheme. So even the CCL, even the Zydus Life as there's some update. The company has received the final approval from the US FDA for the acetaminophen injection. PTC Industries, there is one update. The company has signed an agreement with BAE Systems to reduce titanium casting for the 155 mm ultra lightweight hosiery in India, which is a positive for the use company. And one more update was on Kalyan Jewelers. The ICR has updated the credit rating assigned to bank facility of the company, which might be a little bit positive. Reddington, the Apple had shown a double-digit growth in India in September quarter. So, and the last, the Blue Dart. So the net profit for the Blue Dart was up by 3.4% at rupees 93.6 crores versus 90.6 crores. The revenue was up by 17.9% at rupees 1,325 crores versus 1,123 crores. This was year on year. And lastly, before the ending of the call, we have a positive view on the market. Sector-wise, auto continues to look positive. Metals are looking for the bounce back trade. We have a cautious view on the FMCG, and specifically HUL. One has to be a little bit cautious. It's looking weak on charts. So that's all from mine. I will hand over to Hitendra for more Hindi updates. Thank you. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. We'll convert this call in Hindi. हम इस call को एक बार हिंदी में कर लेते हैं.
स्टार्ट करेंगे आइनॉक्स लीजर के साथ। आइनॉक्स लीजर ने कहा है कि उन्होंने एक कमर्शियल ऑपरेशन अनाउंस किया है अपना मल्टीप्लेक्स चेन विशाखापट्टनम में, और कंपनी ने ये भी कहा है कि टोटल 3 स्क्रीन रहेंगे और 803 सीट्स की सेटिंग रहेगी, और टोटल स्क्रीन साइज देखा जाए तो इनकी 708 स्क्रीन अभी इंडिया में हो चुकी है। कंपनी ने कहा है कि उनका टारगेट है 77 स्क्रीन ऐड करने का FY23 में, और उसमें से 33 अभी तक उन्होंने ऐड कर चुकी है फिस्कल में, और 11 स्क्रीन को एक्वायर करना चाहते हैं अगले इस क्वार्टर के अंदर में। सो ओवरऑल हम देखेंगे स्क्रीन टारगेट्स का जो इनका 43% का टारगेट है वो अचीव हो सकता है, और पीवीआर का जो है वो 30% है, जो कि 125 स्क्रीन एडिशन है FY23 में। सो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है आइनॉक्स के लिए। करेंटली हमारी बाय रेटिंग है 630 प्राइस टारगेट के साथ। देखा जाए तो फ्राइडे को मारुति की नंबर्स है, नंबर्स देखे गए तो इनलाइंस थे हमारे एस्टिमेट के साथ, सिर्फ एक्सेप्ट प्रॉफिट देखा जाए तो 10% हायर था हमारी एस्टिमेट से भी, और स्ट्रीट के एस्टिमेट से भी हायर था। कंपनी की टोटल सेल्स ग्रो देखी गई तो 46% ग्रो हुई। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 500 बेप्स एक्सपांड हुआ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के चलते, और इम्प्रूवमेंट देखा जाए नेट रियलाइजेशन के चलते। हम अगर देख रहे हैं तो आगे भी डिमांड रोबस्ट है, और जो इनकी पेंडिंग ऑर्डर बुकिंग और सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई शॉर्टेज था वो भी ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है। सो मिड एमसीयू सेगमेंट में भी हमें देख रहे हैं ग्रोथ और ऑर्डर एक्सपेक्ट अच्छी रह सकती है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पे मिल सकता है। और इस क्वार्टर में देखेंगे सेल्स और स्प्लिट, जो सेल्स और पार्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% से 64% से ग्रो करने के लिए FY24 के लिए। सो हमने करेंटली इसके ऊपर जो हमारी करंट रेटिंग बाई थी उसको चेंज करके होल्ड कर दिए, प्राइस टारगेट अगेन वही रखा है 10,047 का। सोना कॉम्स के भी नंबर रिपोर्ट के नंबर देखा जाए तो बेटर थे हमारे एस्टिमेट से भी, और सेल्स ग्रो हुई है 12% क्वार्टर पे। एबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ 120 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो डिमांड दिख रही है इंडिया यूएस मार्केट से अच्छी दिख रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक देखी जाए तो फ्लैट ही थी 205 बिलियन के। सो करेंटली हमें सोना कॉम्स पे लग रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो कि 38% पैट से ग्रो हो रही है FY22 से 24 में, और इसका जो एक्सपोजर है ईवी सेगमेंट में भी ये भी बहुत अच्छा है। सो हमारे अभी भी हम एस्टिमेट्स वही मेंटेन कर रहे हैं, तो और रिवर्स प्राइस टारगेट 685 के साथ। लेमन ट्री ये कहा है कि उन्होंने एक जो उनकी होटल है हरिद्वार में जो कि कार्निशन ग्रुप उसे चलाने वाला है, सो उसे वो साइन कर चुके हैं, और ये ज्वालापुर एरिया में रहेगी हरिद्वार में। इस पे टोटल 50 रूम रहेंगे, एक रेस्टोरेंट, मीटिंग रूम्स एंड बैंक्वेट रहेगा। सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हरिद्वार उत्तराखंड स्टेट में, और 7 एग्जिस्टिंग होटल्स ऑलरेडी है इसमें। सो की हाइलाइट्स अगर हम देख रहे हैं तो आईटी रिपोर्ट हमने जो रिलीज की थी 27 मई 2022 में, उसमें जो कहा था उसमें कुछ स्टॉक्स है वो अपने 5 इयर्स एवरेज के आसपास आ रहे थे। सो और पर देखा जाए तो जैसे थोड़ा जो ग्लोबल माहौल अच्छा नहीं चल रहा, लोअर डिस्क्रिप्शन स्पेंडिंग और जो रिटेल मॉर्गेज उसके चलते, पर करेंटली स्टॉक्स में देखा जाए तो जो इनकी 5 ईयर एवरेज पी है कुछ आईटी कंपनीज की जो कि हमारे कवरेज स्टॉक्स में, जो कि टीसीएस, टेक महिंद्रा और जिंसा, वो अपने 5 ईयर पी एवरेज के नीचे चल रहे हैं। सो हमें स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए। अगर हम लार्ज कैप स्पेस में देख रहे हैं तो HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा ध्यान रखें, और मिड कैप पे अगर हम देखना चाहते हैं तो साइंस के साइड पे फोकस कर सकते हैं। सो पर हमें लग रहा है कि हालांकि पीई में फॉल दिखा है तो पर ईपीएस करेक्शन अभी भी होना बचा है, तो थोड़ा हमें इस पे कॉशियस रखना चाहिए। की है सीसीएल के भी नंबर्स देखे गए, नंबर्स देखा गए तो रेवेन्यू देखा गया तो 5 बिलियन था, 50.5% ईयर ऑन ईयर, और एबिटा देखा जाए तो 90 करोड़ के आसपास का देखा गया, जो कि 18.5% है। एबिटा मार्जिन देखा गया तो 19.3% से डिग्री हुआ, जो कि 520 बेप्स है, और बट क्वार्टर पे देखा जाए तो 187 बेप्स से ग्रो हुआ। की प्रॉफिट देखा जाए तो 0.5 मतलब 5 करोड़ के आसपास ग्रो हुआ, जो कि 17.1% का है। कमेंट्री देखे जाए तो एस्टिमेट्स हमारे रेवेन्यू के नीचे देखे गए हैं, और बट रेवेन्यू ग्रो हुआ अच्छे से। सेकेंडली हम देख रहे हैं हीरो मोटर कॉर्प, उसके भी नंबर्स अच्छे देखे गए, जो जो उन्होंने रिटेल ग्रोथ है 20% ग्रो हुआ है इस फेस्टिव पीरियड में, और ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। हाँ, वेदांता के भी नंबर्स देखे गए, नंबर्स में हम देख रहे हैं कि जो इनके रेवेन्यू 5% से फेल हुए 36,654 करोड़ से वर्सेस 38,622 करोड़। एबिटा फेल हुआ 24.5%, जो कि 7,699 करोड़ है वर्सेस 10,197 करोड़। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो वो भी 21% में था, 5% का फॉल देखा गया। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो शार्पली फॉल हुआ 60% से, जो कि 1,808 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर उन्होंने 4,421 करोड़ का दिया गया था। टाटा पावर्स के भी नंबर देखेंगे, रेवेन्यू फॉल हुआ है 3.2% से, जो कि 14,030 करोड़ है,
वर्सेस 14,495 करोड़ का। एबिटा देखा जाए तो 5% से जम देखा है, जो कि 1760 करोड़ के आसपास का वर्सेस 1683 करोड़। मार्जिन में हमें हल्की सी बढ़त देखी गई 100 बेस की, जो कि 12.5% पे है, बट नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 6% से जंप हुआ है, जो कि 935 करोड़ है वर्सेस 883 करोड़। JSW एनर्जी के भी नंबर्स देखे गए, तो रेवेन्यू फेल हुआ 21% से, जो कि 2387 करोड़ का है वर्सेस 3000 करोड़ का। एबिटा फॉल हुआ 13% से, जो कि 889 करोड़ का वर्सेस 1022 करोड़ का। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो वो उसमें राइज देखा गया 4% का, जो कि करेंटली 33.7 था, वो 37% हो गया है। पर नेट प्रॉफिट में फॉल देखा गया 18% का, जो कि 555 करोड़ से 456 करोड़ का। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि आज की जो की अर्निंग्स है वो भारती एयरटेल, कैस्ट्रॉल, टाटा स्टील, डेटा पैटर्न जैसे स्टॉक से आने वाले हैं, तो ये स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, उससे थोड़ी वॉलेटिलिटी भी मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि उन्होंने एक उनकी जो कंपनी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस, उसको एक्वायर किया एडिशनल स्टेक स्काई स्टैंड इंक में, जो कि 123 करोड़ के लिए है, और टोटल स्टेक देखा जाए तो 63% का है। आईओसी की भी नंबर्स देखेंगे तो उन्होंने वापस से सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर लॉस पोस्ट की है 272 करोड़ का। कारण है यही है क्योंकि जो पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस है वो रेट बिलो कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं, इसके चलते। डॉक्टर रेड्डीज के भी नंबर देखेंगे तो इसकी जो पैट है वो 112 करोड़ 1112 करोड़ से ग्रो हुई है, जबकि 992 करोड़ से ग्रो हुई है। शुगर स्टॉक्स पे फोकस रह सकता है कि गवर्नमेंट ने जो बैन है उसको एक्सटेंड कर दिया और 1 साल के लिए अक्टूबर 2023 तक। मारुति सुजुकी ने जो वैगनर कार है, सिलेलो कार और इग्निस कार, जो कि अगस्त 3 से सितंबर 1 में मैन्युफैक्चर, टोटल नियर अबाउट 10,000 कार उससे रिकॉल की गई है। और नायका के लिए ये है कि कंपनी ने इनकी जो रिकॉर्ड डेट है उसको रिवाइज किया है 5:1 बोनस, और जो कि नवंबर 11 थी, जो पहले नवंबर 3 थी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के भी नंबर देखेंगे, और जो कंपनी ने 7% सिक्वेंशियल डिक्लाइन पोस्ट किया है प्रॉफिट में, जो कि 35 करोड़ के आसपास है, बट रेवेन्यू 1.2% से ग्रो, जो कि 1060 करोड़ के आसपास है। Zydus लाइफ साइंस को यूएसएफडी अप्रूवल मिल गया है एसेटामिनोफेन के लिए। इंजेक्शन ये है, बेसिकली ये मॉडरेट पेन और माइल्ड फीवर को रिड्यूस करने के लिए होता है। सेल ने भी साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के साथ, उसका जो कमर्शियल ऑपरेशन रॉल के एयरपोर्ट के लिए ये रहेगा, और उड़ान स्कीम के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने भी एक साइन किया है एग्रीमेंट बीई सिस्टम के साथ, बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे टाइटेनियम कास्टिंग, जो कि 155 mm का अल्ट्रा लाइट वेट हाउटाइजर रहेगा। एप्पल इंडिया ने कहा है कि उन्होंने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इंडिया में पोस्ट की है सितंबर क्वार्टर में। ब्लू डार्ट के लास्टली रिजल्ट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ग्रो है 3.4%, जो कि 93 करोड़ है। रेवेन्यू ग्रो है 18% से, जो कि 1325 करोड़ है। और कंसोलिडेटेड एबिटा देखा जाए तो 250 करोड़ के आसपास का है, और ये एक रेस करने वाले एनसीडी 100 करोड़ के भी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।